Okay, bevor wir starten, möchte ich euch erklären. Einen kurzen Moment. Hallo Shivan, willkommen. Hey Sid, Hey, danke. willkommen. Toll. So, heute wir haben einen neuen Mitglied bei uns. Er heißt Shivan und wir alles lernen zusammen Deutsch. Also, Shivendra, we have done a few classes till now, and just wanted to tell you that you can go through the YouTube videos. I have shared the link in our group as well, and they were just basics of German. I will go through. Yeah, so we are just progressing steadily. Before I start, just wanted to tell you all that this video will be recorded and will be posted on YouTube. Also, fangen wir an. Teile ich meine Bildschirm zuerst. Okay, geben Sie mir bitte eine Bescheid, falls Sie können meine Bildschirm sehen. Sie sehen meine Bildschirm? Ja. Ja. Sehr gut. Also, gestern, was haben wir gelernt, ist Articles, das heißt der, die, das. I'll just give a Überblick, a review of what we learned yesterday. So, as in English, we have the and a. In German, the converts to der, die, and das. And D is for feminine, der is for masculine, das is for neutral, and a which converts to eine. Now yesterday we talked about these nominative cases, that is this der, die, das in bestimmt articles. That is when we know that somebody is there, we know that person or thing. And in case if we don't know a player, a ball, a team, so in that case we will be using eine. One important thing wanted to tell you here is, as I told you, der, die, and das. Here I told you masculine, feminine, and neutral. These are in nominative case. Now there are three cases in German: nominative, accusative, and dative, and there is one more that we will talk later on. So there, then the gender that I talked about yesterday, that keeps changing. So in nominative it is der, die, and das, and further we will learn later on. So wir Schritt um Schritt gehen wir weiter mit dieser Grammatik. Jetzt lernen wir nur über nominative. So you should not be confused in case if you find them, for example. Oder you may be even confused when you will find der Frau. Frau means lady, and sometimes in sentences you might find der Frau as well. That is because the case is different. Only nominative Frau is die. Otherwise, in other cases, it can happen that the gender will change and could be even der as well. So we will go by that later on. Also, heute beginnen wir mit Unbestimmt Articles. Yesterday we learned about Bestimmt Articles, that is der, die, das. And today, when we don't know about the person or the thing, then how do we proceed with it? Just a quick moment bitte. Okay. So, heute starten wir mit Unbestimmt Articles. I believe you people already know ein, einer, ein. Anybody there who is not aware of these things? Accordingly, I'll go into the depth of this grammar. I request you first of all, please I unmute am yourselves. aware. I have studied a bit. Okay, So great. Even I. these are indefinite articles. Exactly, absolutely right. Yeah. Absolutely right. And of course, but still, because we are starting from scratch, so I'll quickly cover the basics as well. Okay, so we again, as usual, we have masculine, feminine. Sorry. Control Z.
masculine, feminine, neutral, and then we also have plural. Now think with an open mind, friends. If I say there are two players, right? So players, if I say players, let's say I say a player, it's perfectly fine. But do I say a players? Will that be right? No. No. No, no. So because a itself means we are talking about single thing only. And in case if there is a group of people, then it could be a team, for example, but never a players. That's not possible, right? So likewise, in English, in German as well, we have ein. Remember, for masculine, I would request somebody to please tell me what is the bestimmt article for masculine. There. Yes. Other guy, please tell me what is the bestimmt article for feminine. D. Right. Ishita, you please tell out what is the bestimmt article for Das. neutral. Das. Right. And then in German, if we go by this neutral, this unbestimmt, we have ein, then eine, then nochmals ein. Okay, and then as I told you, we cannot say a children, right? Because children itself is it's a group of people. So I cannot say a player. So there is no such bestimmt article for plural. Okay, I will give you a few examples. Just give me a second. Okay, so here we get it could be like ein Lehrer. Lehrer, somebody please tell me what does Lehrer means? Male teacher. Yes. Teacher. Male teacher. Yes, male teacher. Make sure. Normally in English we say blindly teacher, irrespective of gender, but in German it could be Lehrer or Lehrerin. Likewise, it could be student or studentin. Likewise, it could be colleague or colleaguin. Right? So make sure that there is a difference between English and German at almost every stage. So here we'll say for masculine ein Lehrer, and then remember for feminine it is eine. So here it will be eine Frau, or you can say eine Lehrerin, right? Gehen wir weiter. For neutral it is ein Buch, for example, right? Shivendra, you know that for every article there is masculine, feminine, and neutral, but Yeah. in German, in English, we normally say like non-living things are treated as neutral, but in Yeah. German there is no such logic, right? No such logic. Yes, correct. Perfect, perfect. So here for just as a coincidence, we have neutral for book, but you will find many things which are living, but still they are considered as neutral. Like kind or Yes, mention. the skin, you're right, absolutely right. Correct. Okay, then in case if we have many Frauen, for example, Frauen, so we will use no unbestimmt article, right? Because it's a group of people, so we cannot say a ladies. It's just not possible, right? Likewise, suppose if we have Blumen, so these are all plurals, and we don't use anything. Anybody remember what is the bestimmt article for plural? D. D. Yes, perfect. Now this is a blanket rule. There are very very less rules in any language, but in German, fortunately, we have a blanket rule that any plural in bestimmt article is always D.
So it could be the Männer, for example, that is a group of people, or maybe whatever example you can think of. It's Die always die. Augen. Wie bitte? Die Augen. Augen, perfekt, 100% auch, perfekt. Augen bedeutet eyes. Eyes. Okay. Now, once again, Shivendra, for you as well, I yesterday told that whenever you learn any new noun, the moment you learn that noun, please remember the gender as well, right? Because I made a mistake when The most difficult part. yes, you are right. Unfortunately, the most difficult part. However, there are a couple of rules that may help you over a period of time, but still you have to remember the gender by heart, right? So always, whenever you learn, or whenever we will be learning new nouns, we will be learning their gender right away, right? Okay. Um, so just to revise, can somebody tell me what is newspaper of Deutsch? Zeitung. Zeitung. But I would request you to please tell me the gender as well. Die Zeitung. Die Zeitung. Yes, die Zeitung. Right? And then what about hotel? Das Hotel. Hotel, sorry. You're sure? Because I am not sure about that. I think, let me check. Okay, take your time. What I mean to say is, whenever you are learning a new noun, please, along with the noun, remember the gender as well. See, if the start is correct, the total journey will be correct. For me, it so happened that my teacher did not emphasize upon this point, and till today, even after 5 years of learning German, I cannot remember the genders. So I don't want you people to make that mistake. By the way, the room is equal to das Zimmer. Okay, please remember, room is Zimmer, and the article, the noun is, the gender is neutral. Okay. Yes, it is Das Hotel only. Das Hotel, na? Perfect. All right. Just give me a second. ओके शिवेंद्र, फॉर यू एज वेल, हम लोग ने कल ये दिया था होमवर्क. सो देयर इज अ कंसेप्ट बेसिस ऑन विच आई विल बी गिविंग होमवर्क एवरी डे. इट्स अ 25 point homework. Okay. Right? Hausaufgabe. Here you might find 10 verbs, 10 noun, and 5 phrases, for example. Or you may find 25 verbs straight away, or 25 phrases. So always the sum will be 25 only, right? So I request everybody to learn these 25 points by heart, because right now I'm not going to revise or ask you that whether you have learned it or not, but within a day or two, when we will be framing our sentences, we will be using these verbs extensively. And then I would expect everybody to answer sofort, that is immediately, instead of going back to check your homeworks and check the dictionary that you might have built. I would request you that these simple things please remember by heart. By the way, these verbs that I gave you yesterday, they were out of 200 verbs that are most commonly used in German language. I actually wanted to make it 500, but it may be too much for you people right now. So what I am focusing upon for homework is this 25 points homework is covering most of the things, the most general things, the most used things in daily lives, right? So these verbs that you are seeing, ergeben, erinnern, erkennen, you will find in most of the sentences in day-to-day life, as well as most of the texts.
So please make sure that you remember everything, because in a couple of days we will be starting framing sentences, and then I would expect everybody, every participant to learn or recall these verbs, right? Okay. So let's proceed now. By the way, Shiven, one important thing for you as well. हम लोग का जो approach है, it is like kind of a parallel approach. You take it like this. These are the points. It could be like verbs, it could be noun, counting, or maybe your phrases, grammar, or whatever it may be. And we are parallelly running everything. है ना? क्योंकि मैं ऐसा भी कर सकता था कि सिर्फ नाउन को ही पकड़ के हम आगे बढ़ जाएं 5-6 आवर्स के लिए, एंड ये सब पीछे छूट जाए, तो है ना, दैट वुड मेक इट वेरी बोरिंग, एंड आई एम अफ्रेड दैट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल आल्सो डिक्रीज विद टाइम देन इन दिस क्लास, सो वो नहीं होना चाहिए. सो इसलिए हम लोग थोड़ा सा नाउन कर लिए, थोड़ा सा वर्ब कर लिए, थोड़े बहुत फ्रेजेस भी कर लेंगे कल. लाइकवाइज हम लोग पैरेलली कई चीजों को लेते हुए चल रहे हैं, right? Vielleicht wir können ein bisschen sprechen auch. Yes. Diskutieren, machen. Yes. Und üben, sprechen. Absolutely right. Yeah. Actually, वही plan है. That is our plan. That once we are up to a certain level of, knowledge, so हम लोग उसको बोलने चालने में भी शुरू करेंगे, and then we'll. That's why I want you everybody to keep yourselves unmute, so that हम लोग immediately answers दे पाए. वही टारगेट है, क्योंकि at the end of the day you should be able to communicate with external world in Germany ना. हमारा ग्रामर बहुत अच्छा हो और हम बोल ना पाए, एंड टाइम पे हमें वो वर्ब भी याद ना आए कि क्या बोलना है यहाँ पे, तो it's up to you. We had this problem with English, right? In India you know everything but you can't speak. Exactly. तो जैसे होता है ना कि जो वर्ड होता है दैट शुड सिट ऑन योर टंग, द मोमेंट यू रिकॉल वो बाहर आ जाना चाहिए ना. सो ग्रेट, हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, एंड वी विल गो इन दिस वे ओनली. ऑलराइट, सो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था? आईना, राइट? इसी का एक बड़ा भाई एक और होता है, उसको बोलते हैं काइंड. सो दिस इज अगेन unbestimmt Article. Unbestimmt Article. Now इसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इट इज क्वाइट सिमिलर विथ आइना. सो वही टेबल में फिर से बनाऊंगा, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल. अब यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग का पहले था आइन, आइना, आइनिन, आइन, आइना, आइन. सो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा काइन, काइना, and then kind again. Plural में भी it will come as kind. Okay. So अगर मुझे बोलना है कि there is no teacher, there is no male teacher, for example, so I will say kind Lehrer. And if I were to say there is no ladies around, so I'll say keine Frau, right? And if I say that there is no window, or you can say there is no kind, no small children around, so kind. And then kind में आप कुछ भी use कर सकते हो, whatever you feel like, anything is possible. The only thing is it has to be kind, and just like हमने D सुना था कि plural में it's always D, so it's always kind in plural, irrespective of whichever gender it is. Now, once again, I would like to recall कि कोई भी noun अगर है, किसी भी type का noun है, तो उसका जो first character है, it's always capitalized, right? So you make sure friends कि irrespective of its position in a sentence, normally अगर मैं बोलूँ कि I live in a city, तो इंग्लिश में जो सिटी रहेगा दैट इज स्मॉल कैरेक्टर्स. आई लिव इन सिटी, सो इट इज स्मॉल बिकॉज ये नाउन है बट एट द एंड है. बट इन जर्मन ich wohne in einem Stadt, सो स्टार्ट जो रहेगा इट इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड.
So it's just a Wiederholung, that is revision of yesterday what we learned. Okay. Fragen dazu. 9. 9, 9, 9. Shivind, any questions? No, all good so far. All right, perfect. बीच बीच में हम लोग इस टाइप से फ्रागेन दाजू यस फ्रागेन दाजू एक काइंड ऑफ अ फ्रेज है बेसिकली इट हैज अ मीनिंग आल्सो फ्रागेन मींस क्वेश्चन दाजू मींस upon that something that I have done some right away, right? Like I taught some lessons, some information I gave you, so upon that is dazu, right? These phrases are very important because we just learn it and we can use it. Yes, exactly. Actually अगर आप जर्मन पढ़ते जाओगे ग्रामर पढ़ते जाओगे ना तो ये फ्रेज आपको कहीं पे भी सुनने को नहीं मिलेगा फ्रागेन दाजू, लेकिन ये बोलचाल की भाषा में यूज होने वाला टर्म है. सो इवन अगर आप कभी भी कोई प्रेजेंटेशन दो या किसी को कुछ समझाओ एंड देन आखिरी में आप डायरेक्ट पूछ सकते हो फ्रागेन दाजू मींस आपको कोई सवाल है क्या, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस. अदरवाइज एक और फ्रेज यूज कर सकते हैं दैट इज आल्सो इक्वली पॉपुलर, जो कि थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है. haben Sie noch Fragen? Haben Sie noch Fragen? That means, do you have any remaining questions? So ये भी एक जेनरिक टर्म है जो कि बहुत यूज होता है. Okay. So now, okay. Now again a small Wiederholung, a small revision. What we learned yesterday about verbs. So we learned about regular verbs. और इसी को बोलते हैं weak verbs. Please don't try to find any logic behind weak and regular, right? It is just remember this. We have learned regular verbs or weak verbs, or auf Deutsch es ist regelmäßig. Verben oder Schwachverben. So इसका मतलब सिर्फ ये था कि they follow a kind of a rule. Can somebody give an example of verbs that we learned yesterday? Any verb? Kommen. Haben. Arbeiten. Pardon, Ishita? Arbeiten. Arbeiten. Antworten. Spielen. Malen. One person, one answer, please. Expression. Yes, expression. उसमें थोड़ा सा डाउट था. That I'll check out later. Also, wie bitte? Bekommen auch. Right. So, just to tell all, bekommen is to receive, kommen is to come, arbeiten is to work, antworten is to give an answer, spielen is to play. So, everybody knows. Shivind, you also must be knowing the conjugation of verbs. Yeah, I somewhat know. All right, but I forgot. All right, no problem. हम लोग ने कल लर्न किया था ये. So क्या होता है कि इंग्लिश में अगर आप बोलो किसी को, so I come. Oh no, I remember. Okay. You come. We come. Right? It is always come. Otherwise, I'll say I eat. You eat. We eat. Even you all भी अगर होगा तो भी वो वही रहेगा, eat या कम रहेगा, राइट? लेकिन जब हम लोग जर्मन में बात करते हैं तो दिस eat it will keep on changing with every person, like I, me, you, हर एक के लिए चेंज होता रहेगा.
सो एक छोटा सा एग्जाम्पल आई क्विकली टेक ओवर. फॉर एग्जाम्पल, इश आर्बाइटर. Somebody please tell do. Du Arbeit. Arbeitest. Arbeitest. Then Sie ist arbeitet. Arbeitet. yes, arbeit. Wir arbeiten. Wir arbeiten. Ihr arbeitet. Arbeitet. Ihr arbeitet. Sie arbeiten. Sie arbeiten. Right. Okay. So hier man kann einfach sehen, es gibt ein Stammwort. Das heißt, Stammwort bedeutet a root word. So here Arbeiter is Stammwort that that remains all the times. But what changes is the ending only. So here it is T, EST, TEN, blah 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 blah. So that means all regelmäßig Verben, sie wird immer dieser Trend folgen, diese Regel immer folgen. Das heißt, अगर हम लोग को Arbeiten का पूरा conjugation समझ में आ गया तो Antworten का भी आ जाएगा, Spielen का भी आ जाएगा, right? So शिवेंद, ये क्या होता है कि हर एक इश, डू, RGS, वियर, ईयर, जीजी के अकॉर्डिंगली उसका एंडिंग चेंज होता रहता है, राइट? सो उससे मतलब इंग्लिश और इसमें बहुत ज्यादा ये डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हम लोग को एक वर्ब के फिर 6 फॉर्म्स याद करने पड़ते हैं, राइट? और इसमें 6 forms and then the tenses, so then it becomes a lot. हाँ, टेंस तो एक्चुअली टेंस तो अंग्रेजी में भी आता है, जैसे ईट का एट हो जाता है ना, ईटन हो जाता है, तो वो तो वहां पे भी है, बट यहाँ पे भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इफ यू विल सी तो वियर का जो फॉर्म है आर्बाइटन और जीजी का है वो सेम रहेगा, राइट? लाइकवाइज RGS और ईयर का भी एक ही रहता है, RGS और ईयर का, यस, है ना? तो इनवेरिएबली 2 तो कम हो गए, 6 में से 2 गए तो 4 ही याद करने पड़ रहे हैं. और क्योंकि मोर देन 80% जो वर्ब्स है ना वो ये रूल फॉलो करते हैं, तो बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है. अपने को सिर्फ आखिरी के ये 4 कैरेक्टर्स याद कर लेने हैं, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड दैट वर्ब्स विल फॉलो दिस रूल ओनली, राइट? सो नथिंग टू वरी, विथ प्रैक्टिस ये हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी. ओके, सो हम लोग ने जो कल बात की थी वो की थी regelmäßig Verben, that is they follow the rules. Now there are a few verbs which are equally important and they are unregelmäßig, that is irregular. IRREGULAR, irregular verbs. So ये क्या है? So इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है sein. Sein is to be. अभी just see what I'm saying and later on I'll explain everything. So ish by the way means I, myself. Ish bin. अभी देखो sein का कोई भी वो रूल फॉलो नहीं करेगा, जाइनर, जाइने, जाइन टेस्ट, जाइन टेन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इसमें. सो ये है प्योरली इररेगुलर वर्ब, इसको आपको बाय हार्ट याद करना ही पड़ेगा, और ये इतना कॉमनली यूज होता है कि आप याद ना भी करोगे तो याद हो जाएगा अपने आप ही. सो इश बिन डू दिस, परफेक्ट. देन समबडी एल्स प्लीज टेल आगे. जी बताओ भाई, कोई आगे का? Ist. Yes, ist. Somebody else? wir sind, Wir sind. Perfect. Ihr seid. ihr seid, Perfect. And then Sie sie sind. तो खुशी की बात यह है कि यहाँ पर भी देखो तो जीजी का भी वही जिंड है और वियर का भी वही जिंड है, तो इतना टेंशन नहीं है यहाँ पे, राइट? इसी का एक छोटा भाई और है, रादर जुड़वा भाई है, और वो है हामन.
और ये लिटरली इंग्लिश का टू हैव हो जाता है, और यू कैन से ओनली हैव, राइट। नाउ यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल मेक मिस्टेक। इसको जब हम बोलेंगे इन बोलचाल की भाषा में तो हाबेन नहीं बोलेंगे, वी हैव टू टॉक इन प्योर जर्मन एक्सेंट एंड इट इज हाबन, 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 राइट। So I request everybody to please pronounce it one by one. Haben. Please, once. Haben. Haben, haben. 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 You just take it as ha, b, haben. Haben. Haben, right? Haben. Haben, yeah, it's British. Like बहुत ही मतलब ब और न एक तरह से चिपके रहेंगे, हम, राइट। इशिता प्लीज। इशिता, कैन यू गिव इट ट्राई? Probably she's muted. So maybe Yes. she's. Please check, Ishita, you're mute. Eine Antwort. Wahrscheinlich Mikrofon funktioniert nicht wieder. Also, keine Sorge, gehen wir weiter dann. So, haben जो है वो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा. Don't go by the pronunciation of each and every character, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम लिख ही नहीं सकते. Pronunciation we just can't write, right? So, ये होता है haben. So, haben का conjugation कैसा होता है वो अभी हम देखेंगे. So, ich habe. Yes, ich habe. ये भी आगे मैं बताऊंगा कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है. Du hast. Do one person one answer please. RGS. Hat. Perfect. Eine kurze Moment bitte. Yes. Ich habe, du hast, RGS hat. Wir haben. Haben. Right. Ihr Habt. Haben. perfekt. Und dann Sie Haben. perfect. Okay, so I request friends, please take a screenshot of this page. Once again, just want to remind you, अगर आप Windows और Druck का बटन दबाते हो, Windows और Print Screen, तो वो एक फाइल जैसा सेव हो जाएगा पिक्चर्स में जाके. So please take a screenshot of this page. Right? Okay. Ich habe, du hast, Sie haben. Right. Okay, so अभी इसका यूज कैसे करना है और प्रोनाउंसिएशन करना है उस पर थोड़ा सा मैं फोकस करूंगा. So as I told you, it is haben, haben, right? Not haben, it is haben. Now, hab कैसे प्रोनाउंस करेंगे? It is not hab, it is not habe, it is hab. Ich habe. Hab, ja genau, ich habe, right? Ich habe. Somebody please give a try. Ich habe. Perfect. Somebody else? I heard two voices. Shivan, please try. Ich habe. Perfect. Ishita? Ich habe. Perfect. Ishita, can you give a try for haben? Haben. Actually, my internet connection just went in the middle, so I was not able to. No I issues. don't know what we have to do. No issues. In fact, अगर ऐसा होता है तो you can always ask back कि भाई आपने क्या बताया, मेरे से मिस हो गया है. So don't shy upon that. So इशिता, मैं ये बता रहा था कि haben लिखने में haben है, लेकिन बोलने में ये haben है, haben, right? ब और न it's like mix up होके छोटा हो ही रह जाता है. It does not grow too much. So it becomes haben, right? So just try to pronounce this haben. Haben. Perfekt. Also, gehen wir weiter. Dann bitte sprechen Sie du hast. Du hast. Du hast. Shivan? Du hast. Ja. Ishita? Du hast. Genau. Erstes Hart ist okay. Wir haben, ihr habt, Sie haben. Perfekt.
So now we are in a position to frame a few sentences, right? So let's say I want to say, I am a student, right? So give it a try. First of all, you have to find out the gender of this student, right? I. There. I. Yeah. Can I try? Yeah, please give it a try. Ich bin ein Student. Perfect. सो देखो, सबसे पहले इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है कि जेंडर क्या है स्टूडेंट का. नाउ वंस अगेन फ्रेंड्स, अगर मैंने बोला इंडिया में मेरी कार, ये गलत लिख दिया, मेरी कार, और अगर किसी ने बोल दिया मेरा कार, तो इसमें से किसी को भी पुलिस पकड़ के नहीं ले गई, इसमें से किसी का भी मतलब क्लियर नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है. ठीक है, हर एक को समझ में आ गया कि somebody is talking about his or her car, that is auto. So das Auto, perfect. So ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस टाइम पे at this point of learning, if you get too much engrossed into learning genders, then probably you will be extremely demotivated. मतलब मैंने कई लोगों को तो जर्मन लर्निंग छोड़ते हुए देख दिया है क्योंकि उनको जेंडर लर्न होता ही नहीं है आखिर तक. तो प्लीज 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 इस बात को लेके ज्यादा टेंशन मत लेना अभी, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मुझे खुद को भी याद नहीं है स्टूडेंट का जेंडर क्या होता है, बट स्टिल आई एम डूइंग द जॉब. तो अगर कोई बोलता है आई एम अ स्टूडेंट, अगर इसका जेंडर आपको याद नहीं हो रहा है, सो गिव इट अ ट्राई. Ich bin ein Student, ich bin ein Student. आईना इज डेफिनेटली रॉन्ग, लेकिन इसमें कोई पुलिस का केस नहीं हो जाएगा, कोई मैटर नहीं हो जाएगा इसको लेके. सो ऑलवेज ट्राई टू लर्न, बट गिव इट अ ट्राई. डोंट बी डिमोटिवेटेड विद दिस जेंडर स्टफ. ओके, and anyways, you can always Google, you can always check out what is the gender of a particular noun, and better to write it in a piece of paper somewhere around. Just post it and recall it every day at least once or twice, so that आपको याद रहेगा कि ये क्या जेंडर था उसका. Okay, so somebody gave a try and told, can you please repeat? Ich bin ein Student. Perfect. Right. So anybody has any doubt ये sentence कैसे frame हुआ? 9. I heard only 9. 1. 9. Perfect. 9. Perfect. So nobody has any doubt in it. So still I would like to give us at least a basic. Ich bin ein Student. तो bin जो है it is clear. Ich bin, यहीं से आ जाता है. Ich bin, I am a student. Absolutely simple. Now I give you a 10 euro tip. अगर मैं बोलता हूं I am an engineer, ENGINEER. So if I were to try, I think engineer is again masculine. So most likely I'll be saying Ich bin ein Ingenieur, right? Do everybody agree with it? Yes. I think in Deutsch, when you tell profession, you don't put the articles, indefinite articles before. Yes. यही मैं बताना चाह रहा था. ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है. इवन इफ यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश ऑल्सो, अगर किसी जर्मन से हम इंग्लिश में भी बात करते हैं तो भी अगर उसको बोलना है कि आई एम इंजीनियर, सो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई एम अ इंजीनियर और आई एम एन इंजीनियर. कोई भी प्रोफेशन हो, डॉक्टर, टीचर, नर्स, प्रोफेसर, एडवोकेट, व्हाटएवर, कोई भी प्रोफेशन के पहले नो unbestimmt आर्टिकल, नो indefinite आर्टिकल्स. ये मेरा चल के दे रहा है indefinite. ठीक है.
सो मेक श्योर कि कोई भी प्रोफेशन अगर आप बोल रहे हो तो उसके पहले ये नहीं आएगा. You have to wipe it out. Only say ich bin Ingenieur. And because Germans are so used to this concept that even if you are talking in the English also, omit out this unbestimmt article. I am engineer, straight away tell that. Right? So ये बहुत important चीज है because ये छोटी छोटी tips होते हैं that makes a lot of difference. Also, gehen wir weiter, gebe ich noch ein Beispiel. We play cricket. Anna, Yeah, somebody? wir spielt Cricket. I think it will be wir spielen Cricket. Yes. Just to Oh, give sorry, yeah. Anna, ich spiele, du spielst, sie spielt, wir spielen. So we becomes wir. Play becomes spielen with small s, spielen, and cricket becomes kriket. Okay, then let's say ये क्या हुआ? I drive a car. Somebody else who did not give answer previously, please try. Drive के लिए you have to use fahre. Ich fahre. Oh. Somebody? Ich fahre ein Auto. Perfect. Ich fahre. Now again, I have to not check. Ein Auto. Ist das Auto. Yes, So das ist Auto. ein Auto. Right. So ich fahre ein Auto. Right. No issues. You know, even if you say ein, einer, einem, eines, whatever you say, as long as you are giving the right communication, you are doing the right, you are conveying your idea, that is sufficient. Right. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को 2 साल हो गए और मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करता हूँ मैं भी जर्मन बोलने में, लेकिन आज तक कोई कलीग ने इन स्पाइट ऑफ मी टेलिंग देम अगेन एंड अगेन कि प्लीज मेरे को करेक्ट कर दिया करो, nobody corrects and they say that it's okay, no issues at all. So you have to proceed. You should not think of perfection all the times and don't proceed. That's also not accepted. Okay, then noch ein Beispiel. Moment. She lives in Mumbai. So somebody else, maybe Shiven, you can give a try. Sie lebt in Mumbai. Perfect. No, it's okay. Leben ist auch to live. Wohnen ist auch to live. So it's gleich. Sie lebt in Mumbai. By the way, in जो होता है वो कॉमन होता है इंग्लिश और जर्मन का. So it's a good news for everybody. Okay. Then we drink Wasser. Only one person. Maybe Ishita, you give a try. Okay. Wir trinken Wasser. Perfect. 100%. Wir trinken Wasser. Make sure. Oh, sorry. We drink water. Okay. Make sure Wasser is again noun. So इसका जो first character है वो हमेशा capital में रहेगा. यहाँ full stop रहेगा और wir का ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये first character है. Right? Okay. एक दो example और करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है. Maybe I'll check out with yesterday's homework. First moment, bitte. Okay. So
we stay here. First of all, please tell me what verb should I use here. Bleiben. Bleiben. Perfect, bleiben. Now again friends, ये जो bleiben आया है ये पिछले होमवर्क से आया है. So ऐसे क्वेश्चंस I would start pointing personally, right? So maybe ऐसा ही कुछ कल या परसों में हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो I may ask personally to with a name कि भाई you please tell me what is the corresponding word or verb, and I expect that you should be able to answer this. Okay, so we stay here. So क्या हो जाएगा? कोई somebody give a try. It will be wir bleiben hier. Yes, perfect. Wir bleiben here. 100% perfect. Then I ask you one more. We need bread. Let's say. May I? Yes, please. Wir brauchen Brot. Perfect. Wir brauchen Brot. Okay. Then somebody tell me what is to develop. May I? Please. Entwickeln. Yes, perfect. Entwickeln. So जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनकी जो जॉब पोस्टिंग होती है उसमें सॉफ्टवेयर एंटविकलर रहता है, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपर. सो अगर मैं बोलूं कि यू डेवलप सॉफ्टवेयर, इसमें क्या लगता है बिटे? Du wickelst Software. यस, परफेक्ट. डू एंटविकल्स सॉफ्टवेयर. अभी अगर मैं इसमें किसी बड़े से बुजुर्ग से बात कर रहा हूं तो क्या हो सकता है? Sie. आगे Sie Software. जी सॉफ्टवेयर. No, Sie entwickeln Software. यस, जी एंटविकल सॉफ्टवेयर. आई थिंक ये मैंने कल स्किप कर दिया था जो मैं बता नहीं पाया था, स्पेशली फॉर शिवेंद्र ऑल्सो. हम लोग जब बात करते हैं तो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ टॉकिंग टू समबडी. वन इज डुज़न एंड वन इज सीज़न. जस्ट टू रिकॉल, ये डुज़न नहीं है, ये डुज़न है, राइट? बिकॉज जेड का प्रोनाउंसिएशन तज करके होता है, टी जेड करके होता है. सो इट इज डुज़न एंड सीज़न. सो अगर हम किसी बड़े बुजुर्ग से बात कर रहे हैं, BUJURG बुजुर्ग, तो हम लोग को सिटीजन करना है. या किसी ऑफिशियल से, फॉर एग्जांपल पुलिस से बात कर रहे हैं या आउसलैंड बेहोडे राट हाउस इसमें जाके बात कर रहे हैं, सो ऑलवेज सिटीजन, राइट? या इवन विथ अ डॉक्टर और विथ डॉक्टर. और डुज़न होता है अगर हम किसी एकदम क्लोज फ्रेंड से बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेंड, या कोई एकदम कलीग है, और या हम अपने से छोटे से बात कर रहे हैं, तो हमें डुज़न यूज करना होता है. सो अगर मुझे बोलना है डू यू रिमेंबर मी, तो आई आस्क समबडी विथ जी, प्लीज टेल मी. आई आस्क समबडी विथ डू, प्लीज टेल मी. गिव अ ट्राई. Ernähren Sie mich? Yes, perfect. और डू में Ernähr. It's a difficult word. Ernährst du mich? perfect. 100% perfect. Okay friends, so अभी ये अगर if you will see, तो यहाँ पे क्या होता है जब क्वेश्चन हम पूछते हैं, सो इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन में जो अपना वर्ब होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, राइट? सो लेट्स गो बिहाइंड. यू डेवलप सॉफ्टवेयर, राइट? सो अगर यही मैं इसको क्वेश्चन पूछना चाहूँ, डू यू डेवलप सॉफ्टवेयर, सो इसका आंसर हो जाएगा एंटविकल जी सॉफ्टवेयर, राइट? एंटविकल जी
सॉफ्टवेयर, ये हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं सो ये वर्ब जो होता है वो फर्स्ट पोजीशन में आ जाता है। ये वैसे हम आगे भी लेंगे, काफी डिटेल में करेंगे। लेट्स से इफ आई आस्क डू वी नीड ब्रॉट, राइट? सो हमने पहले लिखा था वी आर ब्राउकन ब्रॉट। अभी ये इस क्वेश्चन का जब हम जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा Brauchen wir Brot? यस, ब्राउकन वी आर ब्रॉट, राइट? सो अभी whoever answered, please give others also a try, allow others to try. We stay here को अगर मैं बोलना चाहूँ do we stay here, so ये क्या कन्वर्ट हो सकता है? Give a try please. Bleiben wir hier? Yes, bleiben wir here, right? और इसमें ध्यान रखना है although it is a verb, लेकिन क्योंकि ये bleiben का फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस है, इसलिए बी इसका कैपिटल हो जाएगा। सो इशिता, यू मे गिव अ ट्राई नाउ। वी ड्रिंक वाटर, अगर मैं इसको क्वेश्चन बना लूं डू वी ड्रिंक वाटर, देन ये क्या हो सकता है? Trinken wir Wasser. यस, एब्सोल्युटली राइट, ट्रिंकन वियर वासर, परफेक्ट। तो वी अंडरस्टूड हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस एज वेल। ये वैसे बड़ा इलेबोरेट टॉपिक है, ये आगे जाके और भी आएगा, and we will take it up later on as well. Okay, now एक दो example और, then we'll mark Schluss. She makes sandwich. Somebody? ओके, थोड़ा सा डाउट आ जाएगा इसमें। ये जो मेक्स है ये एक बहुत ही इट्स लाइक यूनिवर्सल सोल्जर। मार्केन कैन बी यूज्ड इन मोर देन 1 dozen सिनेरियोज। आई थिंक इसका कोई लिमिट ही नहीं है। मार्केन मीन्स कुछ भी कोई कर रहा हो। अगर मैं दुकान भी बंद कर रहा हूँ तो इश मार्क श्लुस, राइट? अगर मैं केक बना रहा हूँ तो इश मार्क है केक कुकन और केक्सन। सो मार्केन कोई भी एक्टिविटी के लिए हम जेनरिक यूज कर सकते हैं, राइट? सो गिव अ ट्राई। शी मेक्स सैंडविच, प्लीज। Sie macht Sandwich. यस, जी मार्क्ड सैंडविच। फॉर्चुनेटली मार्किन जो है वो प्योरली रेगुलर है, सो कोई टेंशन नहीं है, इट फॉलोज ऑल द रूल्स। जी मार्क्स सैंडविच। एंड देन वी आर lernen, Lernen Deutsch. Somebody else give a try. Lernen wir Deutsch? ये क्वेश्चन नहीं हुआ। We are learning Deutsch. Oh sorry, ये मैंने इंग्लिश में, ये तो मैंने जर्मन में लिख दिया। I'm extremely sorry. Yes, we learn Deutsch becomes we are learning Deutsch. And do we learn Deutsch is lernen wir Deutsch. You are right. Du hast recht. Okay, sorry. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे। परफेक्ट। सो आई थिंक ये टॉपिक्स हमारे पूरे हो गए आज के। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। यस, एक छोटी सी टेबल है जो कि आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, जस्ट कुछ मोमेंट पीछे। यस, हियर। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फोटो। ये बहुत ज्यादा यूज आने वाला है आगे। ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? Yep. गुड। आई थिंक यहाँ पे मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। हो गया। सो ये बेसिकली क्या है, ये एक तरह का बेसिस है जो आगे एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी यूज्ड। सो जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल्स मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल, दे आर लाइक देयर, दी, das and die.
जस्ट टू रिकॉल, मैंने स्टार्टिंग में भी ये बताया था कि हम लोग जब बात करते हैं ये नाउन्स की और ये जेंडर्स की, तो ये ऑलवेज इन नॉमिनेटिव होता है, राइट? इट्स नॉमिनेटिव। अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक्यूजेटिव भी होता है, एक डाटिव भी होता है। इसके कई सारे हिंट्स हैं जो कि वी विल टॉक अबाउट लेटर ऑन इन आवर केसेस क्लास। लेकिन व्हाट आई वांटेड टू पॉइंट आउट इज it may happen that in dative a feminine will also be there, right? She may become you may look, it may look like as if the frau जो gender है frau का वो dare हो गया, वो masculine हो गया, but then again there are certain hints basis on which you can find out that no, the gender is actually feminine, लेकिन क्योंकि वो dative case में यूज हो रहा है इसलिए उसका gender change हो गया है, right? सो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये टेबल यू प्लीज रिमेंबर बाय हार्ट। मतलब आई वुड रादर रिक्वेस्ट यू कि इसको किसी पेपर में लिख के दिन में कम से कम 4 से 5 बार इसको देखते जाओ, सो दैट ये आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए। ये टेबल में मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल ऊपर है एंड नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और जेनेटिव। ये मैं लिख देता हूं अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में। नॉमिनेटिव, ये अच्छी राइटिंग तो नहीं हुई। अक्यूजेटिव, dative and genitive, right? Now इसमें जो जेनेटिव केस होता है ये ज़्यादा यूज होता नहीं है, ये बहुत ही रेयरली यूज होगा, तो इस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे नहीं, इस पे वी वोंट स्पेंड टू मच टाइम। टाइम विल बी स्पेंट ऑन नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव एंड डेटिव, देयर दी डास, टेन दी डास दी, डेम देयर डेम डेम, राइट? एंड लाइकवाइज ये क्योंकि हमारे बेस्टिम्ड आर्टिकल्स हैं, bestimmt articles, similarly unbestimmt articles, that is ein, eine, ein का भी एक टेबल आएगा, but I would prefer not to show it right away क्योंकि ये थोड़ा सा overwhelming हो जाएगा। So I think for today we are done as usual. Fragen dazu. 9. 9. 9. Alles klar. Perfect. Okay. All right. So once again, you will receive a PDF file with homework for tomorrow, for today and tomorrow. So I request you कि उसमें जो रहेगा वो क्या रहेगा मुझे भी पता नहीं है, but 25 points का रहेगा, and I request you कि उसको by heart learn कर लीजिएगा, right? And then again we will meet tomorrow, and again we will keep on using the verbs that are used in this homework, so that you keep on wiederholing, you keep on revising it, and you have to learn those verbs and phrases by heart. All right, so I thank you for your time and efforts, and this next month. Cheers. Thanks, Chef. Bis Ciao. morgen. Ciao. Morgen. Morgen. Tschüss.